Good morning, class. My name is Azeen Zehra. I am currently pursuing my master's from Jamia Millia Islamia in biochemistry. Today, we are going to discuss the structure of DNA. This topic is taken from chapter 6 of class 12th biology, molecular basis of inheritance. Now, let's begin with the term DNA itself. DNA stands for deoxyribonucleic acid. What does DNA stands for? DNA stands for deoxyribonucleic acid. Now, DNA in case of eukaryotes can be found in the nucleus, and in case of prokaryotes it can be found in the cytoplasm, not surrounded by any nuclear membrane. Now, in case of prokaryotes, along with main DNA there can also be present plasmid. Now, what is plasmid? Plasmid basically एक circular DNA है which is double stranded inside the prokaryotes. Now, plasmid can range from 1 to 1000 or maybe more than 1000 in some cases. So I hope this is clear. DNA stands for deoxyribonucleic acid. Inside the eukaryotes, it's present inside the nucleus, and in prokaryotes, it is found in the cytoplasm. Along with the main DNA in prokaryotes, there is also some secondary DNA called plasmid. Plasmid is a small circular double-stranded DNA which can range in number from 1 to thousands. Now let's see how inside a eukaryotic cell DNA is present, as it is going to be the topic of our discussion today. Let's consider this is our eukaryotic cell. With this is plasma membrane, and inside the cell this is our nucleus. This is our nuclear membrane. Now inside the nucleus this is our DNA. Looking at the picture, you can say that I have shown the DNA in the uncoiled state, but we have to keep this in mind. During the different stages of cell cycle, DNA can go from uncoiled or uncondensed form to the condensed form, which is our chromosome, but that is the topic of later discussion. Now let's begin with the structure of DNA. This page is taken from the NCERT books. I hope you are familiar with this page. So now let's begin with reading. So the first line says DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. The length of DNA is usually defined as number of nucleotides or a pair of nucleotides referred to as base pair present in it. Now what does this mean? Here we define DNA as a polymer. Now what is a polymer? पॉलीमर बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना है. लेट्स जस्ट से आई कंसिडर ए यूनिट ए. अगर मैं बहुत सारे ए एक साथ मिला दूँ, दिस ए इज अ हाइपोथेटिकल कंपाउंड, ये कुछ भी हो सकता है. सो दिस वुड बी कॉल्ड अ पॉलीमर. नाउ इन केस ऑफ डीएनए, दिस यूनिट इज आर न्यूक्लियोटाइड and this polymer is our DNA. I hope the point is clear. So DNA is a polymer of nucleotides that join together by different bonds. Bonds are also an important topic when we consider the structure of DNA. So a nucleotide join by different kinds of bond and form long chain of nucleotide that is called DNA. Hence DNA can also be called a polynucleotide chain. Poly means many, nucleotide is a nucleotide, so polynucleotide chain. The length of DNA is usually defined as number of nucleotide. Basically number of nucleotides हमें अगर पता है किसी भी DNA के, तो हम उसकी length को reduce कर सकते हैं. We can find out the length of the DNA. Now we're going to look at some examples. Now first example is a bacteriophage that is known as 5174. Now what is a bacteriophage? Bacteriophage is a virus that attacks specifically bacteria. 5174 has 5386 nucleotides. Now if we go to the next example, bacteriophage lambda has 48502 base pairs. Here we know nucleotide. Now what is the difference between nucleotides and base pair? Two nucleotides आपस में जब pair करते हैं, that is basically a base pair. When the DNA is double stranded, there is the presence of base pairs. But when the DNA is single stranded, there is no pairing, hence nucleotides is mentioned. तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बैक्टीरियोफेज 5 लैम्डा 174 में जो DNA है that is single stranded. How is the DNA here? It is a single stranded DNA. But in case of bacteriophage lambda, it is double stranded. How do we know this? Because base pair is written here and nucleotide is written here. That is an indication towards the single stranded DNA, and base pairing is an indication towards the double stranded DNA. Now let's move on to the next example, that is our bacteria E. coli. E stands for Escherichia coli. It has 4 million base pair, 4.6 into 10 to the power 6 base pair. Now again this is base pair, hence double stranded DNA. उसके बाद हम देखेंगे haploid content of human DNA. Haploid याद रखिएगा, this is haploid. If the haploid content is asked, we should say 3.3 into 10 to the power 9 base pair. But if diploid is asked, we can mention 6.6 into 10 to the power 9 base pair. If the question says mention the haploid content of human DNA, तो हम क्या बोलेंगे 3.3 into 10 to the power 9 base pair. लेकिन अगर haploid की जगह diploid आ जाए, now what is diploid? Diploid is 2n. यहाँ पर n है हमारा कितना 3.3 into 10 to the power 9 base pair. तो हमारा हैप्लॉइड कितना हो जाएगा 2 into n. सो 2 into
this will result in this. So 6.6 into 10 to the power 9 base pair. Now I have summarized this paragraph onto the next slides. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. क्या है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली यूनिट है डीएनए जो कि पॉलीमर है, उसकी यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड. जो अब न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें, सो न्यूक्लियोटाइड कैन बी फॉर्म्ड ऑफ थ्री थिंग्स. थ्री कंपोनेंट्स है न्यूक्लियोटाइड के. पहला क्या है? शुगर. नेक्स्ट इज फॉस्फेट एंड नेक्स्ट इज ए नाइट्रोजनस बेस. नाउ फर्स्ट लुक एट व्हाट इज द शुगर हियर. नाउ द शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड in the DNA is deoxyribose. Now the sugar present in the DNA is deoxyribose. Now what is deoxyribose? Deoxyribose एक पेंटोज शुगर है, मतलब जिसमें 5 कार्बन है, वो शुगर है. इसकी जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन. Hence deoxyribose is a pentose sugar. In DNA deoxyribose is present, but in case of RNA the sugar present is ribose. What is the difference between ribose and deoxyribose? अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में. Now what is phosphate here? Phosphate is PO4 minus 3. This group is attached to the sugar to form nucleotide. Now the third component is our nitrogenous base. Nitrogenous base basically ringed structures हैं जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन मेन एटम्स हैं हमारी रिंग के. तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो सकते हैं डीएनए में. इट कैन बी प्यूरिन एंड द सेकेंड वन इज पायरिमिडीन. नाउ प्यूरिन आर ऑफ 2 types and pyrimidines are of 3 types. Now what are the two pyrimidines? What are the two purines? The first one is adenine and the second one is guanine. And for the pyrimidine there are 3 types. First is uracil, then next is cytosine, and third is thymine. I hope this is clear. So a nucleotide contains 3 components: sugar, phosphate and nitrogenous base. The sugar present in DNA is deoxyribose, whereas in case of RNA जो sugar है वो ribose है. Deoxyribose और ribose दोनों ही pentose sugar हैं. Pentose as in जिसकी रिंग में 5 कार्बन है. Now next group is phosphate. Phosphate is PO4 minus 3. Nitrogenous base can be of 2 types. Nitrogenous base purine और pyrimidine ये दो तरह की हो सकती हैं. Purine are adenine and guanine and pyrimidine are uracil, cytosine and thymine. अब जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन के वो आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे जाएंगे. सी इन केस ऑफ प्यूरिन द रिंग इज डबल. सी 2 रिंग्स प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे पास, वेयर एज इन केस ऑफ पायरिमिडीन दीज आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो एडेनिन, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, दिस इज गुआनिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन. हमने इन्हीं नाइट्रोजन स्पेस क्यों कहा? क्योंकि नाइट्रोजन हमें दिख रहे हैं इनकी रिंग के स्ट्रक्चर में. आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर फॉर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन. Let's recap a bit. So nitrogenous base can be of 2 types, purine and pyrimidine. Purine are of again 2 types, adenine and guanine. Pyrimidine are of 3 types, uracil, cytosine and thymine. Now let's move on to the structure. Purine here has 2 ring structures. एक 6 एटम की रिंग है और एक 5 एटम की रिंग है. सो प्यूरिन में 2 रिंग हमें देखने को मिलती हैं. हाउ मेनी रिंग्स आर शोन इन प्यूरिन? 2 ring structure, and pyrimidine is a single ring structure. I hope this is clear. Now let's move on to the structures of sugar present in the nucleic acid. अब हमें यहाँ पर 2 तरह की शुगर्स दिखाई पड़ रही हैं. फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोज एंड द सेकेंड इज राइबोज. दिस इज प्रेजेंट इन डीएनए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एंड दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द आरएनए. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज? अब आप देखेंगे कि 2 प्राइम पोजीशन पर ये जो हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर इस पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर है OH. सो अब हमें स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन मिसिंग है. हेंस द नेम डीऑक्सीराइबोज. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस के 2 प्राइम पोजीशन पे O एटम हमारे पास डीऑक्सीराइबोज में नहीं है, जबकि राइबोज में ये O हमारे पास 2 प्राइम पोजीशन पर प्रेजेंट है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ बेस पेयर. देखें अब डीएनए में क्या होता है, जो अलग अलग तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में पेयरिंग करती हैं, ये तो आपको पता ही होगा. नाउ जो एडेनिन है दैट पेयर्स विद T और जो साइटोसिन है दैट पेयर्स विद G. अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये आपस में किस बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं? दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अब जो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. सो दिस सिंगल पेयरिंग इज कॉल्ड अ बेस पेयर. अगेन दिस सिंगल पेयरिंग इज कॉल्ड अ बेस पेयर. तो डीएनए में हमेशा जो बेस पेयरिंग होगी वो एडेनिन की थाइमिन के साथ होगी वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और साइटोसिन की गुआइनोसिन के साथ होगी वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस सिंगल पेयरिंग इज कॉल्ड अ बेस पेयर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स से A pairs with G. Now this here right here is a mismatch. Now this mismatch can lead to problems in DNA, but these problems will be discussed in higher classes. Now let's move on to our next topic.
Our next topic is nucleoside. Next topic is nucleoside. Now nucleotide and nucleoside are different. See, nucleotide and nucleoside are different. Nucleotide में 3 components होते हैं, whereas nucleoside has only 2 components. These 2 components are also present here. When a nitrogenous base bonds with a pentose sugar, that forms a nucleoside. कैसे बनता है nucleoside? Nitrogenous base bonds with a pentose sugar. तो ये जो हमारा arrangement बना, this right here is called a nucleoside. Now pentose sugar यहाँ पर हमारी दोनों में से कुछ भी हो सकती है. It can be ribose or it can be deoxyribose. Okay. Now this bond right here, that is bond formed between these two, is a N-glycosidic linkage. Glycosidic refers to the bond formed between monosaccharide. Now pentose sugar is a monosaccharide here, hence the glycosidic bond. Now this N here is a reference to the nitrogen of the nitrogenous base. हमने देखा कि नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर्स में आपको काफ़ी जगह नाइट्रोजन दिख जाएंगे. दिस नाइट्रोजन एटम ये जाकर बॉन्ड बनाएगा पेंटोज शुगर से. कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ग्लाइकोसिडिक, हेंस द नेम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. नाउ लेट्स दिस डायग्राम में अगर आप देखें तो दिस इज माय शुगर, दिस इज माय नाइट्रोजनस बेस. सी, सो दीज टू आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. What are these two called? These two are called a nucleoside, and the bond formed between these two is called a N-glycosidic linkage. अब हम देख रहे हैं कि ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है. अब देखिए हमारे पास ये पेंटोस शुगर है. दिस पेंटोस शुगर इज राइबोस और डीऑक्सीराइबोस. तो यहाँ पर जो 1 प्राइम यानी फर्स्ट कार्बन है पेंटोस रिंग का, उसके ऊपर जो OH है उसमें से वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. दिस OH इज़ नॉट एक्चुअली हेयर. ये OH निकल जाएगा, यहाँ पर वाटर निकलेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. और सिंप्लीफिकेशन, हमने यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस ली है. नाइट्रोजनस बेस का एक नाइट्रोजन वो बॉन्ड बनाएगा फर्स्ट प्राइम OH ग्रुप के साथ, ये फर्स्ट प्राइम कार्बन के साथ ऑफ दी pentose sugar. Now let's consider that this is our nitrogen base, and this nitrogen base has a group NH on it, and this is our sugar. Now this sugar is 5 prime carbon हमारा ये है. This contains an OH group. अब ये ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? H2O यहाँ से निकल जाएगा. H2O group will leave and a bond formation will occur. कैसे होगा ये bond formation? This bond formation will occur something like this. Now there is a nitrogen involved, hence the name N-glycosidic linkage. So I hope this is clear now. So N-glycosidic linkage किन दो चीज़ों के बीच में बन रहा है? N-glycosidic linkage forms between a nitrogenous base and a sugar. शुगर के किस कार्बन पर ये बॉन्ड बन रहा है? 1 प्राइम कार्बन जिसपे OH ग्रुप अटैच्ड है, वहाँ पर ये N-glycosidic लिंकेज फॉर्म होती है. नाउ अगर न्यूक्लियोसाइड में इफ न्यूक्लियोसाइड अटैचेस विद द फॉस्फेट ग्रुप, this would result in the structure a nucleotide. So nucleoside bonds with phosphate group resulting in nucleotide. We can see this here. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का जो लिंकेज है, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड बनाता है शुगर के थ्रू ही फॉस्फेट ग्रुप से. तो ये कैसे बनता है? 5 प्राइम CH2, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप होगा. दिस इज द ग्रुप एट 5 प्राइम CH2OH. तो ये फॉस्फेट के साथ फिर वाटर निकलेगा यहाँ से और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. ये कौन सा बॉन्ड है? दैट इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. सो फॉस्फेट ज्वाइन करेगा शुगर से वाया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और शुगर ज्वाइन करेगा नाइट्रोजनस बेस से वाया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड. सो दिस राइट हियर द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. सो आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर. हमारा मेन फोकस पॉइंट यहाँ पर शुगर है. शुगर की 2 पोजीशंस है, 1 प्राइम कार्बन एंड द 5th प्राइम कार्बन. फर्स्ट प्राइम कार्बन पे हमारा नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है वाया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड 5 प्राइम पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है वाया फॉस्फोएस्टर लिंकेज.